Let us wait for next 2-3 minutes, then we will start. Okay, let us start. Today we will start jet transform. So if xn is a signal, then jet transform of xn will be xjet is equal to n tends to, or n is equal to minus infinity to plus infinity. Xn jet to the power minus n. Okay. So this is the formula of jet transform. Now we'll start solving problems. Question 1. If find
Z transform of xn is equal to a to the power n un. So let us try to solve this problem. Okay, so xz. First, all of what is the signal, discrete signal xn is equal to a to the power n un. Okay, so we need to find the Z transform of this. So from the definition, we can write xz is equal to n is equal to minus infinity to plus infinity. A to the power n un z to the power minus n. Fine. So can we write it as n is equal to 0 to plus infinite a to the power n z to the power minus n is equal to n is equal to n equals n equal 0 to infinite a z inverse to the power n. Fine. So we know that if n is equal to 0 to infinite, summation of n is equal to 0 to infinite alpha to the power n is 1 by 1 minus alpha. Let us write it here. We know n is equal to 0 to infinite alpha to the power n is equal to 1 upon 1 minus alpha, or mod alpha is less than 1. The same thing we will get here is equal to 1 upon 1 minus a z inverse
to the power n. No, only h8 inverse, right? For mod a z inverse is less than 1. Fine. So we can write it as 1 upon 1 minus a by z, with mod z is greater than a mod a. Is equal to z upon z minus a. Condition is mod z is greater than mod a. Fine. So what is ROC? ROC is mod z is greater than mod a. So if we plot it, so we will get a circle. Okay. This circle is outside this circle. There is ROC will be. Okay. If this is mod A, if this line is mod z is equal to mod A, fine. So please have a look on the solution. Take 2-3 minutes. If there is any doubt, please ask any queries, and then we will proceed for the next problem. Take 2-3 minutes. Take 1 or 2 more minutes and try to understand what we have done till now. Then we will proceed for the next problem. Next problem is very interesting.
Please take 1 more minute and try to understand what we have done. If there is any query, you can ask. Then we'll proceed for the next problem. So ROC is clear. This is region of convergence. Okay. Now move to the next problem. Find Z transform of find Z transform of xn is equal to minus a to the power n u of minus n minus 1. Okay. So let us try to solve this problem. Again, next step. Is equal to n is equal to infinite minus infinite to plus infinite minus a to the power n u of minus n minus 1 z to the power minus n is equal to, can we write it? N is equal to minus infinity to minus 1 minus a to the power n z to the power minus n. Is this line clear? Please take 1 or 2 minutes and try to understand this line. If there is any query, please ask. Take 1 or 2 minutes and try to understand this line. If there is any query in this line, then ask. Okay, now move to the next part. Put n is equal to minus n. So when डेटा सेट है ये वॉल्यूम वाले में इमेज ने वॉल्यूम को सेट में
So n is equal to minus infinity will be n is equal to infinite and n is equal to minus 1 will be n is equal to 1. Fine. Therefore, xj is equal to minus m is equal to 1 to infinite a to the power minus m z to the power m. Fine. Is equal to minus m is equal to 1 to infinite. Can we write it as A inverse z A inverse z to the power m. So now there is a formula that if summation of m is equal to k to infinite alpha to the power m is equal to alpha to the power k by 1 minus alpha, provided that mod alpha less than 1. Okay. So we will use this formula here. So we are getting we know that m is equal to k to infinite a to the power m is equal to alpha to the power k divided by 1 minus alpha, provided that mod alpha is less than 1. Fine. This formula we will use here. So we will get A inverse z to the power 1 divided by 1 minus A inverse z is equal to
Z by A one minus Z divided by A with condition this was here mod A inverse Z. Here it was minus sign, right? Not less than 1. So it is mod Z by A is less than 1 is equal to minus Z divided by A minus Z. Condition is mod Z is less than A. Is equal to Z upon Z minus A provided mod Z is less than mod A. So here if we draw the ROC, so this is the ROC. This is mod Z is equal to mod A line. Fine. So please have a look what we have done here. This is very interesting problem. Have a look on this. Take 2 or 3 minutes. Take 2 or 3 minutes and try to understand what we have done. Take 1 or 2 more minutes and try to understand what conversion we've done here. This part. If there is any doubt, please ask. So ये जो स्किन कैंसर है और इसके अलावा और किसका स्किन, हाँ हेलो
वो हाँ स्किन कैंसर का और सेल या सेगमेंटेशन, तो इसमें जो डेटा सेट है वो सब तो 2D होगा ना। हाँ, तो उसको रन किए थे, उसका रन वो वो करो ना, जब ये लंग वाला जो है वो तो काफी बड़ा है, तो 3D के लिए तो उसमें ज्यादा टाइम Okay, लगेगा। so if तो there is बोला no था कि doubt, तीन we'll अलग अलग है, proceed. तीनों जो है अलग अलग अपना सिस्टम चलेगा। Properties of जो सिस्टम ROC. था तो उसके इसके लिए क्यों नहीं किए, स्किन इसकी क्या हो We're गया बताओ learning जल्दी तो। here. If it is right-sided signal, then it इससे will be. उससे क्या हो गया, वो तो कोलैप्स तो So let us write properties of ROC. ये बार में इसके कर रहे हैं ना रेटिना ब्लड वेसल सेगमेंटेशन स्क्रीन के करते हैं, लंग वाला जब 3D में तो कहा था उसको भी करो, इस पे ज्यादा सही से हो पा रहा है तो तुम जब वो बड़ा है, जब उसको ज्यादा टाइम लगा तो उसको छोड़ो, उसको 3D वाले को छोड़ो। हाँ स्क्रीन वाला तो इजी हो जाएगा, स्क्रीन वाले को मुझे नहीं लगता है कि वो ज्यादा बड़ा होगा डेटा। स्क्रीन वाला कितना बड़ा है? 1. 6 में If xn स्क्रीन वाला जो है ना 1.1 is जीबी कहीं होगा मेरे ख्याल से। right-sided signal, स्क्रीन वाला जो है वो कितना बड़ा है, तो मुझे लगा मैं भी कुछ स्क्रीन वाले को दिया। हम्म मतलब क्यों क्या है? ऐसा तो नहीं है। if xn is right-sided signal, then ROC will be दोनों में से है, तो मैं तुम्हें ROC is उतना करना है। mod z स्क्रीन वाला तो is मेरे greater पास भी है, than वही वाला सेम डेटा से। comma max. Okay, मैं जो फोल्डर बनाया उसी फोल्डर पे इसको जगह सर। comma x is the maximum मेरे ख्याल से code. अच्छा ये स्क्रीन वाले के लिए जो मॉडल है वो क्या 3D वाला है या 2D वाला है, कोड देखे Next, 2. स्क्रीन के लिए ना। If मॉडल डॉट क्लियर कॉन्सेप्ट xn सीधी से is सीधी सीधी थोड़ा है। left-sided signal, और वो जो मैं एक ये आवाज बार घूम क्यों रहा है, लो। और एक जो मैंने if भेजा था left-sided ब्लड कैंसर का signal, भेजा था ना तुम्हें, then WBC वाला। हाँ तो वो वाला डेटा सेट किया था तो उसको लगाओ ना तब तक, उसको लगा के देखो, वो तो सिंपल 2D इमेज है, ROC उसमें is तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उसमें उसको लो, उसमें क्या, उसमें एरर क्या है? mod z
is less than gamma mean, where gamma mean is the minimum pole of xz. Okay. 3. If xn is two-sided signal, सपोज एक फोल्डर में डाल के जिप करके दिखाऊंगा। then ROC is gamma 1 is less than mod z is less than gamma 2, where gamma 1 comes from RSS, that is right-sided signal, and gamma 2 comes from LSS, left-sided signal. If a signal xn is finite duration signal, then ROC is the entire spectrum, or entire Z, we can say. Fine. So these are 3 properties, and one more properties is if a signal xn is finite duration signal, then ROC is entire Z. Now we will go to a problem. Question 3. Find Z transform of xn is equal to 2 to the power n un plus 3 to the power n un. इसमें क्या एक्सेस नहीं दे रहा, एक्सेस के लिए कुछ उसमें आ रहा है कि लिंक पर क्लिक करने पर रिक्वेस्ट भेजेगा। You people try to solve this problem. Take 2-3 minutes and try. Then we will proceed for the solution. If you can done, then match your answer with mine, and if you cannot, I will solve it for you. But first, try yourself. Take 2-3 minutes and try to solve this problem.
दिखा रहा साइज इसका। Try to solve this problem. You take 1 more minute and try to solve. If you can solve, let's your answer with mine, and if you cannot, I will solve it for you. But first, try yourself. अच्छा, कितना टाइम दे रहा है? अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, चलो बोला। उसको डाउनलोड कर लो, और फिर डाउनलोड करने का रनजीप करने का बाद मुझे बताओ, ठीक है। Okay, let us try to solve this problem. Xz will be this is a to the power n, so we'll go to the a to the power n. This formula, what was it? It was z by z minus a. Mod z greater than mod I. So we can write it z upon z minus 2 plus this is z upon z minus 3. Okay, so what will be the ROC of the signal? Okay, we can write it like this also. Z minus 2 multiplied with z minus 3 it is z multiplied with z minus 3 plus z multiplied with z minus 2. We can more generalize it or simplify this as z minus 2 z minus 3 z into z plus 3 z minus 3 plus z minus 2, so 2z minus 5. Fine. So what is the ROC? ROC is mod z is less greater than gamma max
Okay. So gamma max is 3. You didn't come to the lab. So will you come now? mod z is greater than 3. Come This with is your our laptop. right? Yeah. So have Yeah, a look on this solution. Take 2 minutes and try to 2, 2, understand. 3. If there is any doubt or query, please ask. So basically ROC is, if we plot it, then how will it look like? This is ROC. This is Z is equal to 3. Right? Or we can write this point is plus 3. Have a look on this solution. Then we will proceed for the next problem. Okay, now we will move to the next problem. Problem 4. Find Z transform of x1 is equal to 2 to the power n un plus 3 to the power n u of minus n minus 1. Fine. So this is right-sided signal, this is left-sided signal. So this is R S S, right-sided signal. This is LSS. SS. And this is two-sided signal. Okay.
So here we can write this is okay, fine. We'll first let it go. Provided xn is equal to u to the power n un plus 3 to the power n u of minus n minus 1. So this is right-sided signal. This is left-sided signal. So xz will be is equal to, this is z upon z minus 2 plus or minus, because it was plus, right? So plus z upon z minus 3, just like this. Okay. But what is the ROC? The problem is ROC regarding, right? So here it is two-sided signal because LS and RS both are present, right? So here lambda 1 will be 2 and lambda 2 will be 3. Why? Because in this case it is z greater mod z greater than 2. In this z mod z less than 3. So this will appear. So the region of convergence will be this is region of convergence 2, 3. This is the region of convergence. Okay. So what we have done here, please have a look.
for 2-3 minutes and try to understand. If there is any query, you can ask. So if there is no query, we will proceed. Please have a look on this solution. Then we'll proceed for the next problem. Next problem is very interesting. टेस्ट वाले फोल्डर में जाओ। टेस्ट वाले के अंदर में जाओ। Next problem is very interesting. We'll proceed. उसमें न्यू डेटा के अंदर 4 होगा, एक आई अंडरस्कोर स्क्रीन होगा, एक एम अंडरस्कोर स्क्रीन होगा, इन दोनों को डिलीट करो। कितने Let us go to the question 5. है वैलिडेशन में भी इसी तरीके से होगा, न्यू डेटा के अंदर न्यू मास्क होगा। ठीक है, तो ये फोल्डर हो गया ना। हाँ, इसमें सारा कुछ ऑगमेंट किया हुआ है, सब कुछ है। इसको जरा रन करो तो इस फोल्डर खुलेगा। और फिर क्या होगा, इस डेटा सेट पे करो ना रन कोड को। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। find jet transform of xn is equal to 2 to the power n u of minus n minus 1 plus 3 to the power n u of n. So here it is given that xn is equal to 2 to the power n u of minus n
minus 1 plus 3 to the power n un, right? So the Z transform will be xz. Look, first this is LSS, this is RSS, that is right-sided signal. So xz will be z upon z minus 2 plus z upon z minus 3. Okay, here gamma 1 is equal to 3, this one, because z is greater than 3, right? And gamma 2 is 2. So that means, so now please check whether this is understandable or not till now. This is left-sided signal, this is right-sided signal. And this is the Z transform, this Z by Z minus 2 and Z by Z minus 3. Okay. Is this clear? Is this clear till now? No puedo poner algo. Okay. So 3 less than mod Z less than 2, which does not exist. Which does not exist, right? So as the ROC does not exist, that means the Z transform does not exist. Z transform does not exist. Okay, so have a look on this solution. Take 2 minutes, have a look. If there is any confusion or query, please ask.
Then we'll proceed for the next problem. Take 2 more minutes and try to understand what we have done till now. How this jet transform does not exist. लॉजिक क्या है इसके पीछे, लोअर एंड अपर क्या लेना है, ये सेट कर रहा है कि इसमें हम लोग अल्फा बीटा गामा का हाँ लिमिट कैसे सेट करने का लॉजिक कैसे, ये क्या टेक्निक है, परसेंटाइल वगैरह कुछ कैलकुलेट करना, Take 1 more minute and try to understand what we have done till now. How this jet transform does not exist. कहाँ से रिपोर्ट कहाँ से सर्च किया पहले कि कैसे अल्फा बीटा गामा का इसको ऑटो बॉन्ड रिलेटेड कोई पेपर रिसर्च पेपर ये कहाँ से आया, लॉजिक क्या है इसमें, परसेंटाइल ले लेगा. So let us move to the next problem. If there is no query, जैसे फोर वगैरह चीजें starting point as a transition with bounds, initial bound, that's mean next problem is find one and then four log log books और रहता है इसका फॉर्मूला क्या लिखा है, अल्फा वन को फॉर्मूला लिखो तो क्या jet transform ये लॉग में देखना है तो ज्यादा पता चलेगा लॉग से नीचे जाते हैं क्या log of हाँ पर से मिला है log xm is equal अल्फा to वन अल्फा टू अल्फा थ्री जो ले रहा है ना 2 to the power n वैल्यू ले रहा है, तो ये क्या ले रहा है, सैंपल u of पैरामीटर्स ऑन log स्केल फॉर वेक्टर minus m minus 1 इसका मतलब क्या है, लॉजिक वही तुमने पूछना, लॉजिक क्या है, जो कि Plus. इजी आ रहा है उससे क्या लॉजिक क्या है, पेपर कैसे लिखा है, जो क्लियर लॉजिक ना 3 to the power n implement you are having some auto bond, u how of you are defining that auto bond, minus m minus 1. what this is mathematical है, पेन पेपर है, Okay. मतलब पेन पेपर ला उसको लिख के दिखाओ क्या एक्सप्रेशन क्या कहना चाह रहा है, कंप्यूटर में लिखा है. So find jet transform of xm is equal to 2 to the power n u of minus n minus 1 plus 3 to the power n u of minus n minus 1. Fine. And both are LSS left-sided signal. So can we write xz is equal to इसमें से कोई रैंडम बोल रहा है फिर वो लॉग कहाँ पे जा रहा है, okay, it will be minus क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये वही जो कह रहे थे, कोई पेपर हो जहाँ पे लिखा हो उसके बारे में कहाँ पर लाया it is दिखाओ कहाँ पर है, कुछ लॉजिक को इतना दिन में क्या पढ़ेगा इसके बारे में, कोड दे दिया कोड में क्या करना है, कोड है तो कुछ ना कुछ तो देगा ही, this was right sided लॉजिक signal. क्या है, It was because here it was minus, right? करके रखना चाहिए था ना कुछ, Okay. So बेसिक काम आ रहा है तो चेंज this कैसे will करेंगे, be minus जब कोड ही समझ में नहीं आ रहा है तो लॉजिक की समझ में, तो चेंज क्या करेंगे, jet शुरू से यही बात कर रहा हूँ, पहले
कोड जो लिखा है उसको कोड जो लिखा समझने तक कोड में क्या लिखा है उसके पीछे लॉजिक क्या है, z minus 2 minus काम कर रहा है उसके पीछे लॉजिक क्या है। जैसे मैंने कहा ना मैंने ग्रिप सेट कर लगाया और उसको अपना वैल्यू दे दिया इतना से इतने के बीच में अल्फा बीटा गामा वेरी करेगा और सब वैल्यू z minus 3. तो वो बता So here ROC अल्फा is बीटा गामा कैसे वेरी करेगा, ऑटोमोबाइल लेयर आई इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है वो दिखाओ, इतने दिन में क्या दिखाओ जरा नीचे में जो रन करने पर क्या दिखा रहा है, जरा रन करो तो इसको जरा इसको ऊपर mod z रन करो जरा is नीचे नीचे लगे और फिर से रन gamma करो mean, right? That is 2 रन करो और बताओ जरा less than 2. So please have a look on this solution for 2 minutes. Then we'll proceed for the next problem. रन कर रहा है कोड। हाँ क्या हो गया, अरे कोड रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, टाइम तो लगेगा, ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ या नहीं ये बताओ ना। हाँ हाँ Take 1 more minute and try to understand what we have done here. If there is any query, you can ask. Okay, then let us move to the next सैंपल्स होने problem. चाहिए। Sure. This is very interesting problem. Find और डेटा सेट से क्या लेना देना ट्रेनिंग का, ये क्या 2594 क्या है ये z 2594, transform ट्रेनिंग के लिए हमारे पास तो उससे ज्यादा इमेज है तो क्या दिक्कत हो रही है इसको। अरे ये कौन सी बात है कि सेम डेटा डेटा सेट का साइज सेम रहेगा तो ही कोड रन करेगा नहीं तो नहीं करेगा। of तो क्यों जो डेटा सेट है वो उसमें xn लोड करो तो देखो जरा क्या है, कुछ एरर दे रहा है क्या। is equal to अरे बाबा जो ट्रेनिंग का जो पाथ है उससे ट्रेनिंग की जगह पे इस वाले डेटा सेट का to the पाथ दे power दो, model. ट्रेनिंग में वैलिडेशन में रन So कराओ। this is very interesting problem. What we can write? Model means ठीक is है equal to करो बताओ जरा। n for n greater than or equals 0 हाँ and हो रहा है minus n for n कहाँ less than 0. Okay. So we can write कहाँ से स्टार्ट हुआ ये वाला प्रेडिक्शन डेटा, is this clear? हाँ डेटा का पाथ कौन दिया है। It is very simple expression, right? So हाँ डेटा कौन सा ले रहे हो, x of n तो ले रहे हो कौन is सा, हाँ डेटा equal कहाँ to तुमने अपने सिस्टम में डाउनलोड किए हो, half डेटा कहाँ पर है, कहाँ पर है देखो। to the power n un मॉडल 1 2 3 4 5 ठीक है, plus एक मॉडल वर्तमान में और ग्राउंड 2 3 होगा ना, ग्राउंड 2 है half to the power minus n minus अब क्या हो रहा है कहाँ पर है इसकी कोड में कहाँ पे डेटा को लोड हो रहा है, ये सब तो डिफाइन कर रहा नीचे में होगा देखो one. और
minus L u of minus L minus 1. और ये चीज आप कहाँ P1 P2 Is it clear? Please take 2 minutes and try to understand. Then we'll proceed for the optimizer part of this solution. best optimizer 1 P1 P2 P2 P1 क्या है remove keyboard argument for top right top from the if it the top change top to 3 तब लोगों को क्या रन करो चाहिए रन करो optimization from the 27.2 still कितना सर्च करें लॉजिक क्या है इसका Okay. So xj कैसे ऑटो बॉन्ड कैसे कर रहा है ये कैसे रहा is equal to z upon z minus half minus लॉजिक तो कुछ बता रहे हो क्या कैसे होगा जे क्या इसमें लॉजिक क्या है मतलब कैसे काम कैसे कर रहा है एक काम करो बैठो वेबसाइट बैठो वहां पे सिस्टम पे लेके इस एल्गोरिथम को समझो और उसका लॉजिक क्या है एल्गोरिथम क्या है ये एक्सप्लेन करो ठीक है बैठो इतने दिन में क्या कर रही थी इसको करके रखना चाहिए था ना पहले से तुमसे कोड जो तुमको मिल गया नेट से कोड लेके तुम रन करा दिए तो उससे क्या होगा लॉजिक क्या है ये जब तक पता नहीं चलेगा तब तक तो उसमें क्या कर सकता क्या मॉडिफाई 1 to the power n कितना कितना आ रहा था पहले u of n क्या चेंज क्या किए plus चेंज कोड 2 चेंज to किए the ना क्या power चेंज क्या n u of हाँ जेनेटिक में ही करना है minus 1 minus 1. जेनेटिक में कर रहे तो ठीक है तो ऑटो बॉन्ड में क्या आ रहा है ऑटो बॉन्ड में क्या किया So, now सही we ये can कोड लिया write लिया तो 9% एक्यूरेसी लेना चालू कर इसमें तो फिर 5% वही तो कर रहे थे फिर 5% 87% में कैसे कन्वर्ट हुआ xj is equal to z upon z minus half plus z upon z minus 2 is equal to z divided by 2z minus 1 plus z upon z
minus 2. Fine. Here this is LSS, this is RSS, this is right sided signal, this is left sided signal, right? So lambda 1 and gamma 1 is equal to half and gamma 2 is equal to 2. So ROC is half less than mod z less than 2. If we plot, we will get this is half, this is 2. And this is the ROC. Okay, so please have a look on this solution for 2-3 minutes. अरे जब कोई हैवे नहीं करा तो देखिए जैसे तोड़ना सब टाइम लगेगा this system में आना है. Okay, so next problem. Question 8. पर लोन जीरो थ्री Xn is equal to 5, 3, minus 2, 1, both sides करना है क्या? हाँ. minus 1. हाँ This is initial, right? हाँ That is 0.
at n is equal to 0, find इसके रिप्लाई में भेज रहे थे। Z transform ये पेपर है क्या? हाँ एक सेकंड क्या? ये आर आजाद में पेपर है क्या? भेजा जा इस आजाद ना बाई डायरेक्शनल कॉन्टिन्यूअस म्यू नेट डेंसिटी कनेक्टेड है आई टू बी सीरियल आप सीधे बोलते ना पेपर है 10 पेज okay. हाँ उसका 8 पेज करना तो पहले खोलो डाउनलोड करो हाँ करेक्ट Okay. So how can we solve this? We will use basic definition of Z transform. The signal starts at n minus 2 and ends at n plus 2. Such signal are finite duration signal. Okay. Look, if this is n, that 0 point, then it is minus 1 minus 2. It is plus 1 plus 2. So starts with n minus 2 and ends with n plus 2. So this is a finite duration signal, right? So xz is equal to पेजेस में हमारी पेज में n is equal to minus infinite to plus infinite. X of n z of minus. Okay, अच्छा एक रेफरेंस ना दूसरे पेज पे है equal to ये कितना गंदा फॉर्मेट में है we can write it as n is equal to minus 2 to plus 2. X to the power n, z to the power minus n. Okay, so can we write it as x of minus 2 z of minus 2 minus of minus 2, right? So z square plus x of minus 1 z plus x of 0 z0 z to the power 0 plus x of 1 z of minus 1 plus x of 2 z of minus 2. This is fine. So what is x of minus 2? It is 5. 5 z square plus x of minus 1 means 3 z
plus minus 2. So it will be minus 2 plus 1 and z minus 1, that is 1 upon z. And x sub 2 is minus 1, so minus 1 upon z square. Okay, so as this is a finite duration signal, ROC is entire z plane. Okay, so have a look on this solution, then we'll proceed further. But here at but at z is equal to infinite, xz is infinite, and at z is equal to 0, xz is equal to infinite. Why? Because these two are present 1 upon 0, 1 upon 0. So ROC is entire z plane except z is equal to 0 and z is equal to infinite. Okay, next question number 9. Please have a look on this problem. If there is any query, you can take 2 or 3 minutes.
So question number 9. Find Z transform of xn is equal to lambda n. So xz will be n is equal to minus infinite to plus infinite. Xn z to the power minus n, right, is equal to delta n z to the power minus n at n is equal to 0 is equal to nothing but 1. Okay, and what is ROC? ROC is entire jet plan. So have a look on the solution. Take 1-2 minutes. Okay, next problem. Find jet transform of
xn is equal to un. So xz will be n is equal to minus infinity to plus infinity x of n z to the power minus n is equal to we can write n is equal to 0 to infinite q of n z to the power minus n. So this is nothing but 1 upon 1 minus z inverse for 1 by z less than 1 is equal to z by z minus 1 or mod z is greater than 1. Right? So let us conclude here today. Next we will start properties of J transform.